मेरा विषय इतना नहीं है इससे जुड़ा हुआ, लेकिन कहते हैं लेखकों के लिए हर विषय उनके लिए हमेशा नया और ताज़ा होता है। और मैं समझती हूँ कि दादा साहब फाल्के हमारे प्रथमेश हैं, फिल्म लाइन के प्रथमेश। जैसे हमारे धर्म में गणपति प्रथमेश है, उसी तरह से दादा साहब फाल्के जो है फिल्म लाइन के प्रथमेश है। और उनकी पूजा करना यानी उनको भावांजलि देना हमारे लिए बहुत ही, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये विचार सभी बच्चों का। तो मैंने कहा यह काम बहुत अच्छा करना चाहिए। जिन्होंने निस्वार्थ निष्कपट जिन्होंने इस लाइन को शुरू किया, इतना संघर्ष किया, चलचित्र की दुनिया लाए, ये चमकता हुआ संसार जिन्होंने दिया, जिनकी झिलमिलाहट से आज पूरी फिल्मी दुनिया पूरे विश्व में अपना आकाश फैलाए हुए हैं, ऐसे महापुरुष को मैं बहुत ही प्रणाम करती हूँ और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you. And now, ladies and gentlemen, I'm going to request our gorgeous actress here, Sayami, to say a few words. Good evening, everyone. So I was just talking with Sir here. It's an honor for me to be even associated with the Dada Saheb Phalke Awards, because I am from Nasik, and I don't know if too many people here know that Dada Saheb Phalke was originally from Nasik. So it's a matter of great prestige for me, because it's representing my hometown. Like we all know, he is the father of Indian cinema. So it's a very proud moment. Thank you so much for having me here. Thank you so much, sir. I'm looking forward to the evening. Thank you so much. Yes, sir. We'd love to hear something from you. First of all, I would like to thank Harsh Gupta and Poonam and all the colleagues for this calling me, and and my family also, and giving some time on the stage. Today is a 21st is a day when Raja Harishchandra premiere took place. 21 तारीख को राजा हरिश्चंद्र की प्रीमियर होगा ओलंपिया थिएटर मुंबई में। तो मेरे ख्याल से हर्ष गुप्ता ने ये देख लिया और 21 को ये फंक्शन रख दिया। एंड वन मोर हॉलमार्क ऑफ दिस ईयर 2017 इज दैट 1917 में इंडिया की फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑफ इंडिया लंका दहन बाय दादा साहब फाल्के, उसका 100 इयर्स अभी हो गया है 2017। Lanka Dahan is the first blockbuster film of India, because at that time the collection in Nas Theatre in Mumbai was over 30,000 in 1 week. In Chennai, the coins were so much because that day notes were not there, and Dada Saheb has to force to use the bullock carts, 3 to 4 bullock carts from Chennai to Nasik. So it was a एकदम hit picture था, and अपना history में it is the first hit of the, and that commercial hit we can note that is that because this is 2017 is very important, and that is also double roll का भी 100 years है. In Lanka Dahan it was produced with very limited finance and resources, because that time was war time and Dada Saheb was struggling to save the expenses. Dada Saheb gave the one Ram and Sita role to one male artist Salunke. उसको ही रोल दे दिया, और दिस इज द फर्स्ट डबल रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. उसका भी अब 100 साल हो गए. दीज आर 2 लैंडमार्क्स वी हैव टू रिमेंबर, एंड आई विश ऑल द बेस्ट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू अनाउंस दैट ऑन on 21st I am going to start a first website in the world on Dada Saheb Phalke. And it will be launched in evening, and I will be giving a YouTube this thing, because I talk on Dada Saheb Phalke in English for 20 minutes, highlights, and then I will be taking poll on FB page whether he deserves the Bharat Ratna. I request, I will be sending, and you share maximum, he should get Bharat Ratna next year. That's what I think.
Thank you very much, and thanks a lot. That's, I guess, that is the second part of our show that we are talking about. We will definitely take you in there. हम एक बार इस तरफ आएंगे और मिस्टर प्रताप असगेकर जी से दरखास्त करेंगे कि वो दो शब्द कहें. चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळकेंच्या सन्मानार्थ आपण सारे जमलो आहोत. आपण त्यांचे चाहते आहोत आणि गोरेगाव ईस्टला जी चित्रनगरी म्हणून आम्ही सम्मानित केलेलं दादासाहेब फाळके चित्रनगरी जे आहे त्याचं प्रतिनिधित्व मी करतो आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीचे चित्रमहर्षी दादासाहेब फाळके हे महाराष्ट्राला नव्हे तर संपूर्ण जगाला परिचित आहेत. राजा हरिश्चंद्र हा जो पहिला मुकचित्रपट झाला त्याने भारतीय चित्रपटाची मुहूर्तमेढ रोवली आणि त्यानंतर प्रवास सुरू झाला. तो आज आपण जसा एखादा कल्पवृक्ष फोफावतो तशा प्रकारे चित्रपटसृष्टी ही इंडस्ट्री झाली. सर्व तंत्रज्ञ सर्व लोक हे जर बघितलं तर हा आवाका हा जगभर पसरलेला आहे आणि मराठी चित्रपटाला हिंदी चित्रपटाला जे आज जगाच्या इतिहासामध्ये जे स्थान आहे ते महत्त्वपूर्ण असं स्थान आहे. हे सारी कृपा आहे ती दादासाहेब फाळकेंनी जे कष्ट केले चित्रपटासाठी जे आपलं आयुष्य वेचलं त्याला आहे. राजा हरिश्चंद्रची फॅक्टरी हा जो हरिश्चंद्राची फॅक्टरी हा जर चित्रपट पाहिला तर आपल्या लक्षात येईल की कशा प्रकारचे त्यांनी कष्ट प्राथमिक अवस्थेत केले आणि आज आपण पाहतो आहोत की जगाच्या नकाशामध्ये आपली हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि मराठी चित्रपटसृष्टी पोहोचली आहे. दादासाहेब फाळकेंच्या स्मरणार्थ आता 30 ऑक्टोबरला आम्ही जयंती साजरी करतो आपल्या 30 एप्रिल. तर आपल्या दृष्टीनं ही आनंदाची आणि अत्यंत सुखावह अशी गोष्ट आहे, प्रसन्न करणारी गोष्ट आहे. मी सर्वांच्या वतीनं मी आपले आभार मानतो की आपण मला बोलायला दिलं, आपण मला बोलवलं. मी आपल्या सर्वांचा पुन्हा एकदा आभार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, हर साल हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार जैसे कि बहुत ही ख़ास साल है, बहुत कुछ नई चीज़ें दादा साहब को लेकर हो रही हैं. तो we are coming up with something new this event. Let me tell you that this is happening on 21st of April, St. Andrews, 7 p.m. sharp. So please do come there, grace the occasion with your presence over there. And to tell you a little bit more about what is this new that we are bringing up, I'm going to invite someone very special here. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Harsh Gupta. Harsh has been directing this show since 9 years now, whether it has been the Academy Awards, the Film Foundation Awards or the Excellence Awards with Dada Saheb Phalke ji. तो अब वो हमें बताएंगे कि इस साल हम क्या नया लेकर आ रहे हैं. Thank you everybody. Honorable Pratap Ajwankar ji, Pooja Shri ji, Poonam ji, Pusarkar साहब, मिसेस पुसरकर साहब, मैडम प्रभात पांडे जी, पूजा श्री जी, ज्ञानचंद जी, पुनीत खरे, मयूर मीडिया एंड आवर क्रिएटिव रवि कला एंड ऑल आवर स्पॉन्सर्स एंड थैंक्स टू मीडिया फॉर कमिंग ओवर हियर. दादा साहब फाल्के के बारे में मैं क्या कहूँ, सबने सब कुछ बोल ही दिया ऑलरेडी. दिस इज़ द 148th एनिवर्सरी ऑफ दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड. मैंने 9 साल से इसको ज्वाइन किया है और हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि इस अवार्ड को बहुत एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएं. ये कल हमारे 21st को हमारे एक अवार्ड होने जा रहे हैं सेंट एंड्रूज में. सो आई एम डिक्लेयरिंग है बाय all are coming the celebrities on Dada Saheb Phalke Excellence Award 2017. One is Jubin Nautiyal for the best Excellence Award for the best singer for film Kabil. Payal Dev for the best singer female Kabil. Falguni Phatak for Dandiya Queen. Rohit Roy for negative role for film Kabil. Usha Nadkarni for the best supporting role in Rustam. Anup Jalota ji for the outstanding contribution for the film and classical devotional singing, and our VIP comedian for the Voice of Stars, Raju Srivastava for the best actor, Javed Akhtar Sahab for the outstanding contribution for the writing for the film industry, Kirti Kulhari for the Pink, Piyush Mishra ji for the outstanding performance,
for the Happy Bhag Jayegi, Rana Dagubatti for the memorable and outstanding performance for Gaji Attack. Ye Rishta Kya Kehlata Hai is the longest serial in the film industry for the television. They have passed already 2,300 serials. So the director will be getting the award for this, and the whole team of the Rishta Kya Kehlata Hai is going to come on a stage. Shuchit Sarkar for the film Pink. Mr. Pankaj Kapoor for the Shades of Pankaj. He's very much versatile actor. Urvashi Rotela for the best performance for the year for film Kabil. Hema Malini ji for Kalashiri Award. And the Lifetime Achievement Award to Zinat Aman. And for the memorable performance in a leading role for the Sarvjit as the Dalbir Kaur Aishwarya Rai Bachchan. I hereby declare the Award from Excellence Award 2017 on 21st. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. श्यामली जी इधर बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस बैठी हैं. श्यामी जी, आपने बहुत टाइम दिया. Thank you so much for coming over here. We are going to release an empowerment. A lady now. Next our function is we are going. Their crew has come from USA. A lady has come from USA. Can we have a? Okay. The lady has come from USA. Now our next function we are going to declare Miss Vibha Kapoor. She has come from USA for the women empowerment. Ada is going to declare it. 1 minute. इससे पहले कि मैं आपको हमारे शो के दूसरे हिस्से में लेकर जाऊं, I will request Sayami to join us on the dais, please. And Harsh, if you could please also come on stage. Poonam, आप भी please ऊपर आ जाएगी. Pooja Shiji, please let's all have be there on stage. Thank you. Aye, please come, please. Ladies and gentlemen. Smile Foundation की तरफ से there is a certificate that is being presented to Dada Saheb Phalke Excellence Awards, and I will I'm sorry I forgot the name because off late she came. Syami is so attractive woman. The graceful lady, give her a big hand. She's getting the award for the Mirja Debut Award. लास्ट टाइम हमने दिया था जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ के लड़के को, और उनको आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली एंड आत्या शेट्टी. द सेम अवार्ड शी इज गोइंग टू गेट फॉर दिस अवार्ड 2017 एक्सीलेंस अवार्ड. आई एम सॉरी. So ladies and gentlemen, Sayami is going to present the certificate Harsh on behalf of Smile Foundation. एक जोरदार तालियां हो जाए. सयामी सिर्फ मूवी में स्टंट्स करती हैं, स्टेज पर नहीं. So we can not be so scared of her. All right. Thank you so much, everyone. All right, ladies and gentlemen, I'm going to thank you so much, everyone, for being here on stage. Thank you so much, Sayami. Please be seated. Thank you. Ladies and gentlemen, will quickly take you